हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यही वीडियो आज आज मु आपण मान सहित +3 फर्स्ट इयर फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पॉलिटिकल थ्योरी किसी सेमिस्टर सिलेक्शन इंपोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन गुड़ाक किसी डिस्कसन करी। पूर्व एग्जाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक ऑलरेडी वीडियो बन सारी। जदि आपण देखी ना तो चैनल को जाए देखिपार। तो चैनल स्टार्ट करवा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मीनिंग। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मीनिंग बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो हम डिस्कसन करवा। द टर्म पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज which involve the participation of the people in influencing the decision making process and the whole process of excess of power in society। माने कौन द टर्म जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कौन कर सब कवर कर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज which involve जो इन्वॉल्व था कौन ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। लोक मैंने जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, माने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सब जो इन्फ्लुएंसिंग कर एंड द होल प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर इन सोसाइटी। नेक्स्ट देखिए कौन पीपुल टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ देयर रूलर्स बाय यूजिंग देयर राइट टू वोट इन इलेक्शंस। आम कौन देखिए ना पीपुल टेक पार्ट इन द इलेक्शन, पीपुल कौन इलेक्शन टेक पार्ट नौ ऑफ द रूल्स बाय यूजिंग देयर राइट टू वोट इन द इलेक्शंस। नेक्स्ट देखिए कौन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ masses the decision making process और policy formulation। तो ये कौन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आउ कौन ये सब आम देखुन सकिया जाए कौन ये किए सकिया देखते पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हेन्ज इलाउ देखते। तो नेक्स्ट देखिए कौन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एट वेरियस लेवल इन द पॉलिटिकल सिस्टम। एटा कि कहते माइकल ब्रूस एंड फिलिप आथलर। तो फिलिप आथलर को दुटा उक्ति देते। नेक्स्ट टाइम देख रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मीनिंग कौन? रिप्रेजेंटेशन मीन्स द सिस्टम बाय द व्हिच द पीपल ऑफ ए डेमोक्रेटिक स्टेट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फ्रीली चोजन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। माने कौन रिप्रेजेंटेशन मिनिंग कौन? द सिस्टम जो सिस्टम बाय द व्हिच द पीपल ऑफ ए डेमोक्रेटिक स्टेट जो स्टेट पीपल मैंने आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फ्रीली चोजन। माने रिप्रेजेंट कौन? जो लोक मैंने जो तांकर रिप्रेजेंटेटिव्स जो प्रतिनिधि मानक जो ताके फ्रीली चोजन करछन्ती रिप्रेजेंटेटिव्स रे सेटा कहला से रिप्रेजेंटेशन। माने कौन ताके जो प्रतिनिधि मानक ताके जो रही सेटा कि पारे ताके रिप्रेजेंटेशन करले। They sit in the legislature to deliberate and pass laws on behalf of the people. They exercise control over the executive। तो ये कौन रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन मीनिंग कौन? रिप्रेजेंटेशन means the system by the which the people of a democratic state are represented by their freely chosen elected representatives. They sit in the legislature to deliberate and pass law on behalf of the people. They exercise control over the executive। नेक्स्ट टाइम देखिए कौन इलेक्टोरेट। तो इलेक्टोरेट मीनिंग कौन? द इलेक्टोरेट मीन्स द बॉडी ऑफ ऑल द पीपल who have the right to vote and elect their representatives। Since every citizen of the state usually becomes a voter। माने कौन इलेक्टोरेट मीन्स कौन that the body of all the people who have the right to vote and elect their representatives। इलेक्टोरेट मीनिंग कौन ना जो गोटे बॉडी जो कि माने प्रत्येक पीपुल जो माने कि राइट टू भोट माध्यम राइट टू भोट आउ इलेक्ट देयर राइट टू भोट बाहर अच्छी आ से कौन ना राइट टू भोट एंड इलेक्ट देयर निजर प्रतिनिधि को से इलेक्ट निर्वाचन कर। साइंस एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट यूजुअली बिकम्स ए भोटर। आ प्रत्येक कौन प्रत्येक सिटीजन गोटे ऑफ द स्टेट यूजुअली बिकम्स ए भोटर। गोटे प्रत्येक सिटीजन जो स्टेट अच्छे जन जन गोटे भोटर। आफ्टर अटेनिंग a particular age, the electorate is considered eligible to elect the representatives of all the people। In simple words, we can record the electorate is the collective name of the people who enjoy the right to voter suffrage। माने कौन जो इलेक्टोरेट करती से माने गोटे भोटर किंतु तांकर किछि माने ये समय अछि कौन पार्टिकुलर एज अछि केते ना कोड़े 18 वर्ष केते 21 वर्ष। तो तापर से निज इलेक्टोरेट हो पारे और से इलेक्टोरेट निज पर निजर प्रतिनिधि बाछि पारे। नेक्स्ट देखिए कौन आम इलेक्शन। इलेक्शन मीनिंग कौन? Election is the process
by which the voters or electorate selects the representatives माने कौन इलेक्शन गोटे हूँ प्रक्रिया जो कि भोटर माने से कौन और इलेक्टोरेट्स सिलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव जो कि भोटर आउ इलेक्टोरेट्स माने से रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन सिलेक्ट करती बाय कास्टिंग देयर वोट्स फ्रीली इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस माने कौन से निज निज चॉइस रे फ्रीली पूरा ही से निजर कैंडिडेट को बाछंती इलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ सिलेक्शन of the representatives of the people through the casting votes by the voter माने जो कौन कि ना जो वोट सब कास्टिंग होती से द्वारा इलेक्शन जो पीपल जो रिप्रेजेंट माने इलेक्टेड होई थांती टाइप्स बा मोड ऑफ इलेक्शन माने कौन टाइप्स जहाँ मोड था जदि परीक्षा पचार टाइप्स ऑफ इलेक्शन कहले लिखि और टाइप इन टाइप हम डिस्कशन करबा आ मोड्स ऑफ इलेक्शन कहले मते एही लिखिबो देयर आर टू टाइप्स बा मोड्स ऑफ इलेक्शन कौन कौन डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन तो कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन कौन इन दिस फॉर्म ऑफ इलेक्शन ये जो इलेक्शन रे द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय कास्टिंग देयर वोट्स इन फेवर ऑफ ए कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस माने कौन यही जो फॉर्म इलेक्शन रे पीपल माने कौन डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एटी तांकर निजर रिप्रेजेंटेटिव्स माने को डायरेक्टली इलेक्ट करछथि बाय कास्टिंग देयर वोट्स माने कौन से कास्टिंग वोट कौन निज फेवर रे ऑफ देयर चॉइस माने चॉइस निज फेवर माने निजर रिप्रेजेंटेटिव्स माने को कौन कास्टिंग करंती डायरेक्ट इलेक्शन इज कंसेंटेड टू ए फुली डेमोक्रेटिक सिस्टम because it establishes a direct link between the electors and their representatives. Direct election is consent to a fully democratic system. कारण because it माने है कौन establish कौन करछि it establish माने कौन direct election establishes a direct link between the electors and their representatives. डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन करछि ना गुटे डायरेक्ट लिंक बिटवीन देयर करछि का मध्य रे इलेक्टोरस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स मानक मध्य रे गुटे कौन डायरेक्ट लिंक क्रिएट करछि नेक्स्ट देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन व्हेन पीपल elect their representatives through some intermediaries the election system is designated as indirect election. Indirect election is considered to be less democratic as it does not involve a direct link between the people and their representatives. तो इसलिए कौन indirect democracy. नेक्स्ट टाइम देखिए कौन meaning of representations. तो representation meaning कौन the system of representing the people is called representation. System जो representing जो the people is called representation. Representation means representation means standing for or acting on behalf of the people or a large body of people. Representative democracy in which the people elect representatives who exercise political power on their behalf. माने कौन representation कौन the system of representing the people is called माने कौन जो people माने को representing जो system टा अछि से system टा को representation को होछि. Representation means standing for or acting on behalf of the people or a large body of people. Representative democracy in which the people elect the representatives who exercise political power on their behalf. What is functional representatives? The functional representation का functional representation is also known as occupational representation. It is opposed to the system of territorial or geographical representation, which is criticized by as inconsistent with the true spirit of democracy. तो इसलिए कौन functional representation तो ये मेरा डिस्कशन सर जब आप पीडीएफ चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक टेलीग्राम थी लिंक जॉइन हाँ आप पीडीएफ मिल जाए. थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो.